felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see.
like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are.
like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I've played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to. Yes, sir, it is visible. 1 minute, just मैं setup कर लेते हैं. So, hello friends. Today's session is very interesting and it's very beneficial to all of you because you can add this project in your CV. So that's your session is project development, and I think that your basic project development is portfolio. So that's a portfolio, steps to develop portfolio, and first of all going to add uh, who is taking new or who is taking new session and who new in this session. I mean that who is taking first time this session. So let me give a small introduction about myself. I am Tushar Patodia, and I am generally known as technical head in student chapter DC, and I am currently working on a blockchain technology. So that's all about it. And I am a ओके 1 मिनट सेटअप क्यों नहीं हो रहा है ओके चल नहीं रहा था guys before going to ahead I want to know that who all know about because for all 3 days you are taking sessions organized by GFG-DCE, uh, firstly CSS, JavaScript and React.js, right? So in this session you will learn about React.js with Tailwind CSS. Okay. uh, with all these things you kept in your mind because during the development of this portfolio you will have to keep in mind all these things. Firstly, install Node.js. These all are the steps where we will follow during the project development. Firstly, install Node.js, install any id. 1 minute guys. So sorry guys for this. So we go ahead. These are all the steps. Firstly, we don't take any much more time. Fast. You search on Chrome Node.js. Okay, you will see first nodejs.org. That's the organization of Node.js. Because I am doing this for you or that because I know
that many students faced some problems during the development of React.js. So I am doing from scratch. Okay, we will develop this portfolio from scratch. So that's why I am doing this. You can uh, you can set up the Node.js in your environment. Okay, so this is LTS. I have I installed already, so I am not installing now. Okay, next thing, install Visual Studio Code. I have already, you can download it. Okay, create React application, which is also a front-end library of JavaScript. Next thing, uh, firstly, we make a folder. We make a folder on this डेस्कटॉप पे बना लेते हैं. मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा यहाँ पर GFG-DC portfolio. Now this folder is to be open in the Visual Studio Code. And next thing, we have to create React application. So for this, you have to go in the terminal, and for going to ahead, I want to show one thing to all of you. Just that, or for going to ahead, you can see this is a portfolio. We will develop this portfolio website in today's session. Okay, this is my portfolio. You can edit this portfolio, and even in the end of the session you will get the source code of this portfolio website. Okay, you can add this in your CV. So for developing this, I want to show one thing to you, that search Tailwind CSS. Get started. You can see framework guides, and you have to go create React app. You can see all these are the instructions, or you can see these all the commands you have to put the in your terminal. Firstly, you have to create React app. Okay, Control V. My project name is, you can see anything, I put client, enter. My React application is creating. You can see client folder. Sir, could you please do that again, Tailwind CSS thing? Okay, this is installing. So I want to clear one thing. You can go, you can see in Tailwind CSS also, or you can see also in uh, properly React.js. In React.js documentary, you can see also this thing also. Installation, yeah, installation. You can see also in the docs of the React.js, npm create React app and your app name. Okay, so this also thing is also built in Tailwind CSS documentary. Okay, so that's copy and paste on your terminal. Okay, my React application is creating. Okay, successfully is created my React application. Now we have to check my React application is working or not successfully. So I don't want to now. Next thing, I have to install Tailwind CSS in my system. So change directory, we have to go in client directory, and then control V. Okay, enter.
So you can see package.json. Tailwind CSS has successfully installed, but it's working or not. I will check. We will check for some time. Before checking it, just I remove all these files because I don't want any these files. Remove it as much as simple website. Sorry, code. Your code will work smoothly. Index.css I want. Okay. Next, I don't want this thing. Control A and delete this thing. Now. Okay. Firstly, npm start. This command npm start you can see in package.json, and this is the script start. Just hover it. You can see run script, run start. So enter. Hello world. Our data application is all working, but Tailwind says is also not working. So in order to working Tailwind CSS, we have to this thing also put in our tailwind.config.js. Achha. Next thing, we have to get tailwind.config.js file. So for in order to create tailwind.config.js file, we have to put in this command in your terminal. Control C, Control V. Enter. You can see tailwind.config.js. We finally got this file, and we have to change something. This thing you can see we have to content. Control C, Control S, and last important thing, we have to put this thing in index.css. At the top of index.css. Control S. Now we check my tailwind CSS is working or not. So for that class name and Control S. Okay, not working. Okay. Now our application is not started. We have to start it again. npm start. ये देख सकते हो. You can see our tailwind CSS is also working. Background black. Control S. You can see our tailwind CSS is working now. Now we have to create this portfolio. So firstly, background we want.
Hmm, um, gradient. We want a gradient, so I am taking just put up approaches. Okay, okay, index.css. This CSS I'm just copy. You can search this background, see gradients on Chrome. You can get the code of index of CSS code actually. Control V, Control S. This code you can get from Chrome. के भी डाला नहीं हमने. So app.js, just I want to add this name. What's the name? Welcome. I don't want this thing. तो ओके ऐप है तो मुझे नहीं चाहिए. Now we make a components folder and in components folder we make a navbar. And we have to import the navbar component in app.js. It's automatically imported. This navbar आ चुका है हमारे पास और हमारा वो भी आ चुका है. Now we go navbar and firstly I want to check this our portfolio and I want to tell you one important tip or one important thing. If in that if you are developing your website or you are implementing the code of your website, then you must have a folder in which all the images or all the videos images and videos actually uh, there is must on that folder. Okay, so I have also this images and this logo in our folder. So and just you can imagine that how many tips are imported or how many tips are used in this navbar. You can imagine. So according to according to me there are one div जो कि actually में is the whole div and there are further two divs in nested divs. Okay, so we create that navbar div and is further two divs. You can check it for firstly I have to import all the images firstly. So I am import all these things. Okay, my you can see GFG portfolio. That's my two things. I have to okay or firstly I have a in public folder. You don't touch anything in public folder. Just create a folder.
images, and in images folder you have to put this logo and this images. Now this number in image stack. Or one important thing also, whenever you create divs, make sure uh, you put background or border, anything. I am taking background. Next, if this is the best strategy to create front end, background pink console. ओके, इमेज स्टाइल डाल देते हैं. ऐड एट्रीब्यूट, src, images portfolio.logo. You can see this, that's our portfolio logo, and in this side, you want UL ले सकते हो या फिर कुछ नहीं ले लेते हैं, होम लिख लेते हैं. पहला हमारा होम है. नेक्स्ट कॉन्टेक्ट है, about है. Okay, you can see these two divs, pink and green. These flash directions are column, we have to row, we have to make row. Okay, I am using flex row by default row, and आ चुके हैं. And padding x 20. These all classes I am using in Tailwind CSS. You can just check it in Tailwind CSS, and these all are the classes I am using in the div. These all are the classes. You can see any classes. Just I am using width. These all are the classes, and these all are the properties which is implemented backendly. So these classes you have to use, such that I am using now. Okay, now this thing is justify between. Justify between, these things are between, these two divs are between. Next thing, okay. Now this width I am using 1/2, and this width also 1/2. Okay, and this div padding, I want to give padding by 4, 10, top is 10, and okay. ठीक है. Now these things are also flex.
because I want this also in, in the gap. You can say 8. These things here, I have to center this thing, align. Okay, align horizontally and vertically also. So for this thing, okay, green div के अंदर करना है हमें center and justify end because end में चाहिए हमें. Okay. And text Excel. Okay, and font semi bold. You can see this thing. And portfolio size is bigger. I have to small this thing. Just in images, image tag, class name, width is 4 by 5. Just I have to take. Okay. Also bigger. Smaller. थोड़ा सा और चाहिए हमें. भाई 5 चेक करते हैं. 1/3 चेक करके देख लेते हैं. 1/3 इज फाइन है ना. एंड होम कॉन्टेक्ट अबाउट के कलर भी चेंज कर देते हैं. वाइट ही सही है. हटाकर देखते हैं एक बार बैकग्राउंड. हाउ इज लुकिंग इट. You can see it is looking fine, but it's I have to change color from black to white. You can see this. Okay, it's looking fine. Okay, now I have to I have made navbar, but now my next target is my hero section. Okay, this hero section I have to make. So now I have to make a component. Just move in components folder. I have to make hero section. Okay. In this component, what I have to make. How many divs are used for this section? You can guess. How many divs? It's a whole div and 2 div. Okay, करते हैं. 1 div and further 2 div and make sure whenever to use divs you have to put class names of each div. I am giving PG yellow 500. This div background pink and this div or PG red. Use any color. I'm using these colors. Okay. For this thing, I have to use this div under this div tag.
And what is thing? What is this? You can this thing read? Yes, I'm just copy it. Control C, Control V, and for this thing also Control C, and for the H1 tag Control V. Okay. Now these two H1 tags are used. Next thing is my button. Okay, so H1 tag, after H1 tag use button tag, and in button tag projects. Okay, these are our structure. Let's see. Okay, okay. Next thing we have to import this hero section in our app.js. Automatically imported. This is our section. Now, I don't need. I don't need. I don't need. Next thing, uh, that's my main div. Flex. Okay, flex. Flex कुछ नहीं हुआ because अभी कुछ नहीं आएगा. नीचे का कंटेंट भी हमें चाहिए. div हमें एक और div चाहिए इसके अंदर, और इस div के अंदर हमें क्या चाहिए? इमेज चाहिए ना, image tag else not valid. Next thing, I have to source of this image or dot slash in images folder slash क्या था name. Okay, I am using my image in my portfolio. You can use your pick. Now I have to fix these two divs width. This width is also 1/2. This width also 1/2, and this thing padding x 20. Okay, and this picture I want this thing na. So okay, this div I have to class name, in class name or UNDED rounded full, and then overflow hidden. ओके ओके, इसकी हाइट एंड विड्थ फिक्स करनी पड़ेगी. हाइट हम इसकी देते हैं 32, विड्थ हम इसकी देते हैं 30. Now you can see it's a small 96. We use 96. I have already implemented the whole code of portfolio, so I know that this width is suitable. Otherwise, you have to check the width again and again. My this div, okay.
इस टिप की हम मेरा बैकग्राउंड सेट कर देते हैं. क्या दें? सियान. सियान 500. ओके. ठीक है. ओके ओके, हम इसकी ज़रूरत नहीं है वो एक्चुअली. इस पूरे को हमें एक डिप में डालना होगा ताकि हम फिर से चेक करते हैं. ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. हमें एक कार्ड बनाना है यहाँ पर, तो डिप की ज़रूरत ही नहीं है हमें. Yeah, Akshit, if you have any doubt, you may ask, sir. Right? You can ask. या श्योर. Sir, he is asking that H1 tag शायद ज़्यादा बड़ा हो गया description के लिए. Will you please explain it? वेयर इट दिस थिंग. So friends, you have to see these all are the things are very vital and crucial, because whenever I am implementing the code in React.js, I am making divs. Okay, you can see there are a lot of divs for throughout the website, and these are the play of the divs. यही divs का खेल है पूरा का पूरा वेबसाइट में. Whenever I make or implement the code in React.js, I make div and divs for using frontend, for making frontend. Sorry. So, uh, for making this card, that's a whole div, further two divs, and further one div, in which further तीन और h1 tags हैं और divs हैं, ये भी span tag लगेंगे. तो just I don't want to waste my time. You can just learn in end of the session. You can get the source code of the whole website. Okay, if you have any doubt regarding the code, in the end of the session you can get the whole source code of the portfolio website. Okay, and also in end of the session we I mean after making whole implementing code, we will deploy also Netlify. Okay, you can see in this last thing, to deploy the source code on Netlify. You can use any platform. I am using Netlify. Next thing, now just I background is okay okay. No, I want one thing. Okay okay okay. Background white 50, and next thing control S. ये हो चुका है. राउंडेड 3 XL कर देते हैं इसे. राउंडेड 3 XL. ये राउंड हो चुका है, बट अवर दिस इमेज is centered horizontally or vertically. So for that thing, flex column, and then item center column है ना, तो just d5 होगा, center, फिर item होगा, ems हो गया centered. And just in below this image tag, अच्छा I want border, तो border 2,
just that border white 50, and next thing shadow नीचे ले आते हैं इधर shadow white 50, okay, white 50, and then shadow MD. You can see it's a border and it's a shadow. Okay, it's border. I don't want this border. यहाँ का border दे दिया मैंने. इसमें border नहीं चाहिए मुझे. यहाँ से लेकर के यहाँ तक मुझे कॉपी करना होगा. Ctrl X यहाँ से हटाएंगे और नीचे वाले डिम में लगाएंगे ऐसे. ओके सही. Ctrl S. इसके अंदर आ गया बॉर्डर हमारी इमेज टैग के अंदर. नेक्स्ट थिंग आई वांट दिस थिंग एंड दिस थिंग. ओके ठीक है. ये भी चाहिए. फटाफट से करते हैं. इसके जस्ट नीचे आएंगे, एक H1 टैग लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे अपना नाम. चार पर हो गया तो नहीं डालेंगे. Next thing, okay, for this thing we use a package. You can search on the Chrome and React icons. We use React icons. Okay, npm install React icons. Save. कॉपी कर लेते हैं इसको. और यू कैन ऑल्सो सर्च. यहाँ पर npm सर्च कीजिए. आपको npm नोट पैकेज मैनेजर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं. React icons. पहला सर्च दिखेगा React icons. Just click on the I have copied. Control C, Control V. npm install React icons नाम की डिपेंडेंसी हमने इंस्टॉल कर ली है. Finally installed React icons and okay, now npm start. Just my span tag and I want one thing. ऑटोमेटिकली सारे हो जाएंगे. इससे पहले हम दिखा भी देते हैं React icons का यूज़ करके. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए. हमें लिंक्डइन का आइकन चाहिए, हमें फ़ोन का आइकन चाहिए और ईमेल आईडी का आइकन चाहिए ना, जीमेल का आइकन चाहिए. तो हम सब पे सर्च करते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास में उसका था लिंक्डइन का. यहाँ पर बहुत सारे लिंक्डइन के हैं. मैंने यार यूज़ किया हुआ है, हम उसको यूज़ करेंगे. इंपोर्ट भी करना पड़ेगा हमें. इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम React icons. ओके, और जब हमने कॉपी किया था वहाँ पे पेस्ट कर दो. React icons not found. अच्छा, आपको यहाँ पे स्लैश कर करना ये भी देना पड़ेगा FA. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार. Control S. Yeah, you can see these icon. Okay, now my next icon is phone, Gmail.
You can use anything. I am using which yeah ना. F है ही पहले से ऑलरेडी. कंट्रोल V. कंट्रोल V. अगला अपने पास में यहाँ पर जो है वो जीमेल का है. जीमेल ये रहा. SI जीमेल. Import something from React icons and control V /SI. Now I have to these all things. Control X, span tag, V, and these all things class name, flex, okay. I want gap. I want gap 10. gap 10 ज़्यादा हो गया शायद. सही है वो बाद में देख लेंगे हम. फिलहाल हमें इसको पैडिंग देनी होगी. पैडिंग Y 4 दे देते हैं. और जैसे पैडिंग Y हो गई है, अब इसके बीच में हमें गैप भी चाहिए ना, तो यहाँ पर दे देंगे हम गैप. कितने का दें? 4 पे दे देते हैं. यहाँ पे गैप आ गए हैं. इसको हमें टेक्स्ट को बड़ा करना है, तो जो भी हमारे पास में यहाँ पर रहेंगे इसको क्लास नेम देंगे टेक्स्ट 3XL. सेम ऐसे ही है, तो मैनेज कर सकते हो छोटा बड़ा जो भी है. टेक्स्ट 2XL. काफ़ी बड़ा हो गया, पर मुझे इसको थोड़ा छोटा करना होगा. टेक्स्ट एक्सेल कर देते हैं. एंड नेक्स्ट थिंग okay. I don't want span. I want div also. And this thing, control X, span tag, that's this thing, enter, span tag, and I want this thing, control C, control V, last name, flex, and then items center. ओके, आइटम सेंटर. इसके बीच में गैप भी चाहिए हमें, तो गैप भी दे देते हैं. इसमें 2 का या 3 का दे देते हैं. 3 का सही लग रहा है. अब हमें कॉल के लिए भी चाहिए सेम. कंट्रोल C. Now just this is span tag. I want to copy. Control X, Control V, Control X, V, and Control V.
कि okay, you can see this thing, and all our things are very bigger. टेक्स्ट एक्सेल है. See, now I have to uh, this div, no, this div has been beautified in some time. So okay, बटन भी चाहिए हमें एक, और ये टेक्स्ट तो हमारे पास है ही पहले से. बटन भी रेडी है शायद. बटन नहीं है रेडी. बटन पर चलते हैं. कहाँ है हमारा बटन? ये रहा बटन. प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर चलते हैं. क्लास नेम देते हैं बैकग्राउंड. अब जो कलर मुझे चाहिए यहाँ पर, वो कलर मुझे चाहिए होगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा मुझे वो कलर. तो हम चलते हैं अपने दूसरे कोड में जो मैंने पहले इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ. और जस्ट मुझे वो कलर चाहिए. कंट्रोल सी. ये आ चुका है हमारे पास में. अब बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर जाओ, इस क्लास नेम के अंदर पैडिंग दे दो. नहीं, एक्स में देते हैं हम 4 की, और पैडिंग वाई में देते हैं 2 की. हो गया. और यहाँ पर जाने के बाद में हम यहाँ पर राउंडेड 3 एक्सेल. हो चुका है. और इस प्रोजेक्ट्स को मैं वाइड भी करना है ना, तो यहाँ पर जाने के बाद में हम लिख देंगे टेक्स्ट वाइट. कंट्रोल एस. ये टेक्स्ट वाइट हो चुका है. एंड मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा और दे देनी चाहिए. अच्छा, मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी. नाउ दिस थिंग आई हैव टू वर्टिकली सेंटर, एंड इसकी विड्थ भी हमें कम करनी है. यहाँ पर चलते हैं. इसकी जो टेक्स्ट है, मुझे इसकी विड्थ करनी होगी 1/5. ओके, हो गया. 1/5 नहीं हो सकता. कहाँ गया दूसरा है, इसमें चलते हैं. 1/5 नहीं होगा, 4/5 कर देते हैं. 4/5 सही लग रहा है ना? बाकी थोड़ा और चाहिए. मुझे नहीं मालूम क्या ने उस वक्त पे क्या डाला था. इसकी विड्थ 5/6 इज एक्यूरेट. ओके, प्रोजेक्ट्स भी हो चुका है. इसके हमें टेक्स्ट टाइप एक्सेल करना है. यार दूसरे कोड में क्यों जाता हूँ. यहाँ पर चलते हैं. एक्सेल बड़ा हो गया. 4 एक्सेल, एंड आई वांट गैप. मुझे गैप चाहिए इनके बीच में. सबसे पहली चीज, इसके यहाँ पर जाने के बाद मैं दूंगा फ्लेक्स कॉलम, एंड देन गैप 4.
वैकेंसी के आप आ चुके हैं, पर प्रोजेक्ट में दिक्कत हो गई है। तो मुझे इसकी जो पैडिंग वेडिंग कर रखी है वो ठीक है, बस इसकी जो विड्थ है हमारे पास में वो मुझे करनी पड़ेगी यहाँ पर 1/2। 1/2 थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो 1/4 करके देख लेते हैं। 1/4 भी थोड़ा 1/5 करके देख लेते हैं फिर। 1/5 मुझे लगता है सही है, ठीक है। उसके बाद हम हमें इसको चाहिए वर्टिकली, हमें इसको क्या करना है, सेंटर करना है ना। तो हम नाउ 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 आई हैव टू फ्लेक्स ऑलरेडी है। नाउ आई हैव टू वर्टिकली अलाइंड आइटम्स सेंटर। ये नहीं करना था मुझे, आई जिसमें कॉलम है ना तो जस्टिफाई सेंटर होगा। हो गया जस्टिफाई सेंटर हमारे पास में, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको हटा करके देख लेते हैं अपने बैकग्राउंड को कैसे लग रहा है। ये वाइट होने चाहिए सारे। हो चुका है हमारा। नेक्स्ट थिंग अब हमें जो चाहिए वो ये है, इसका पीछे का वाइट हो गया है, देखना पड़ेगा मुझे। फिफ्टी नहीं 10 होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो चुका है रेडी, हमारा एक कार्ड, और ये भी वाइट होनी चाहिए सारे, तो उसको भी वाइट कर देते हैं। इसका मेन डिव में जाके बस टेक्स्ट वाइट करना है हमें, सब काम अपने आप हो जाएगा। और जितने भी सारे के सारे ये हैं, क्लास नेम, क्लास नेम, क्लास नेम, फिल भी करना पड़ेगा हमें वाइट। ये नहीं हुआ मेरे हिसाब से, वहाँ पे नहीं हुआ होगा, और टेक्स्ट वाइट गलत लगा है। वाइट। नेक्स्ट थिंग, सारे के सारे वाइट हमारे। नाउ आई हैव टू create my education component, okay. So I have to create in my components folder education component.
and I have to import this component. ओके, एजुकेशन आ चुका है हमारा नीचे, ये रहा। हम इस एजुकेशन को बिल्ड करते हैं, ठीक है। क्या है इस एजुकेशन में, ये चीज़ है बस। हमें इसके अंदर कितने डिव्स रख सकते हैं, यू कैन गेस, एनीवन कैन गेस हाउ मेनी डिव्स आर यूजिंग दिस। वन डिव, वन डिव, 3 डिव। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने बार की हीरो सेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन में आते हैं, हमें यहाँ पर चाहिए होगा एक डिव, उसके अंदर हमें चाहिए यहाँ पर फर्दर एक डिव, और फिर चाहिए हमें यहाँ पर एक और डिव। इसको देते हैं क्लास में बैकग्राउंड। Next I want this flex, and this width is 1/2. This width also 1/2. And in this div I want one thing, education. Though I don't want this thing. Education, मैं इसी को एडी बनाना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इसी को एडी बना देते हैं। नहीं यार, नहीं करना चाहता। इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे अपने सारे के सारे कोड को। इसको देंगे हम फ्लेक्स कॉलम, एंड देन प्लस, देख सकते हैं हम। अच्छा ठीक है, तो मुझे यहाँ पर टेक्स्ट राइट करना पड़ेगा। से टेक्स्ट राइट हो चुका है एजुकेशन का। अब हमें इसको पैडिंग x20 चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, इसको पैडिंग x देंगे 20, दे रखा है पहले से। ओके, ये ऑलरेडी एजुकेशन का खुला हुआ है पहले से, इम्प्लीमेंटेड बोर्ड। बट मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, पैडिंग x देना होगा 20 का। इसके लाइन हो चुका है 20 की, ठीक है, लेफ्ट साइड से देने पर पैडिंग। नेक्स्ट इसका मुझे बढ़ाना होगा साइज टेक्स्ट, ठीक चल, ये 4 कर देता है, 4 होगा। इतना सही लग रहा है मुझे। इसमें मैंने 5 किया हुआ है। एजुकेशन का कलर भी चेंज कर देते हैं। इसका कलर चेंज करने के लिए हमें टेक्स्ट लिखना होगा। तो कलर मैंने इसमें यूज़ किया हुआ था हीरो सेक्शन में, याद होगा आपको। इसके कलर को हम करेंगे कॉपी, इसके एजुकेशन में कर देंगे पेस्ट। एजुकेशन उसको मुझे मेरे हिसाब से बोल्ड भी कर देना चाहिए।
सेमी बोल्ड, फॉन्ट सेमी बोल्ड सही लग रहा है। अब हमें इस एजुकेशन के अंदर क्या चाहिए था, ये चाहिए ना। तो ये हमारे पास में एक डिव है और ये हमारे पास में पूरा एक डिव है जो कि जस्टिफाई बिटवीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, ये रहा हमारे पास में एक डिव इसके अंदर, और इसके अंदर फर्दर एक और डिव है हमारे पास में, ये रहा। अब इन दोनों डिव के अंदर करना है हमें जो भी काम करना है हमें, फिर देखना पड़ेगा। अब इसके अंदर ये दो H1 टैग लगेंगे ऊपर नीचे, पेस्ट, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड मेक इट बना के रखेंगे। हमें यहाँ पे स्पैन चाहिए होंगे क्योंकि बहुत सारे चाहिए हमें, और उसके बाद में यहाँ पर भी दो H1 टैग रखेंगे नीचे वाले में। नीचे वाले को भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसे, कंट्रोल S। अभी मुझे जो उसका मेन डिव है, I have to put justify between, control S, now just check it। हो चुका है, पर ये चीज़ हमें एंड में चाहिए ना, ये चीज़ हमें एंड में चाहिए। तो दिस div also flex and then the flex column and then यहाँ पे देने की ज़रूरत है हमें। justify and new आइटम सेंड करके देख लेते हैं। हो गया हमारे पास में आइटम सेंड, बट आई डोंट वांट दिस I want this thing, control X in a div, control V, now justify and justify and items and ये होगा। बट अब सही है, अभी ये पूरे एंड से मैच नहीं हो रहा, अब सही हो गया। नाउ एज लाइक दिस, मुझे भी तीन और चाहिए इसमें, है ना। तो यहाँ पर चलते हैं, मुझे यहाँ पर जो फर्दर डिव्स हैं, मुझे गैप भी तो चाहिए। इसके मेन डिव में मुझे यहाँ पर चाहिए होगा गैप, जो कि 10 का मेरे हिसाब से सही रहेगा। गैप 10 हो गया, सही है। नेक्स्ट थिंग, इनके बीच में मुझे गैप चाहिए होंगे, वो भी 4 के। तो यहाँ पर चलते हैं, इसमें नहीं चाहिए मुझे गैप। अच्छा ठीक है,
बट इसके बीच में गैप मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको फर्दर एक डिव में डाल सकते हैं। इसको हम फर्दर एक डिव में डाल देंगे। कंट्रोल एक्स, एक और डिव लिया, कंट्रोल वी किया, और जो इसका मेन डिव है इसे लिख देते हैं। सेव करने पर कुछ पड़ नहीं रहा होगा। अब इसके बीच में मुझे क्या दे देना है, सिंपल है ना। क्लास नेम फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम, तो मुझे इसको कैप देना होगा 4 का। आता कैप मुझे नहीं देना इसके बीच में, ठीक है। उसके बाद हम मुझे यहाँ पर एक और चाहिए। अच्छा, इसका अपने डाटा भी चेंज कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और नेक्स्ट थिंग कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड जहाँ तक मुझे याद है हमारे 3 आ चुके हैं यहाँ पे, और मुझे इसको भी चेंज करना है नीचे वाले को। ठीक है, तो so now it's clear and it's fine. Now I have to remove all the backgrounds such that red and pink. I have made this section also. Yellow भी नहीं चाहिए बैकग्राउंड, और तो बस चॉइस में से कुछ आने देना। एल ऐड कर लेते हैं फटाफट से। Okay, these are the black. I want white. So in the main div, you put text white. Yeah, some text white. And now I have to make my next experience. This is very small, 2 मिनट में हो जाएगा। हमें कंपोनेंट बनाना है एक्सपीरियंस के नाम से, डॉट js RFCE. Okay, you can just one tag and just
experience. Now let's have to import the section. Experience automatically imported my app.js. And you can see my experience. Now I want div. ये तो बन चुका है हमारा, अभी हमें यहाँ पर जाना है। एक्सपीरियंस में कुछ नहीं है, बस सेम थिंग है। मैं चाहूँगा यहाँ पर जाऊँगा, एजुकेशन में जाऊँगा, पूरा डेब्यू उठाऊँगा। बस मुझे ये वाला डिव है, ये करना है ऐसे। एजुकेशन किसी के पास जस्ट आ जाएगा यहाँ पर एक्सपीरियंस। यहाँ पर जाने के बाद में मुझे एक चाहिए होगा डिव, अंदर मुझे यहाँ पर चाहिए h1। इस डिव के अंदर मुझे चाहिए यहाँ पर फ्लैक्स एंड देन कॉलम और टेक्स्ट वाइट। यहाँ पर चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। एक और h1 टैग लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V। एक और h1 टैग लेंगे हम। You can see this thing, but I want cap, so this gap 4. Gap 4 is fine. Oh, gap 2. Gap 2 is fine. Now I have completed my experience section. My next section is projects. Okay. Next technical skills, then my footer, then complete my project. So I have to make my project section. एक बनाएंगे, दोनों अपने आप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस कंपोनेंट्स में जाकर के एक कंपोनेंट बनाना है जिसका नाम होगा projects.js। और अब मुझे यहाँ पर भी सेम सोच रहा हूँ कि इसी को ही उठा लेता हूँ, Ctrl+C प्रोजेक्ट्स, क्योंकि यहाँ नहीं, यहाँ पर Ctrl+V। यहाँ पर मुझे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए मेरे प्रोजेक्ट्स। और इस प्रोजेक्ट को मुझे कैसे डेवलप करना है, यहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, एक्सपेंड टैग हो जाएगा। यहाँ पर तुम कैस कर सकते हो कि किस तरीके से हमें कितने टिप्स लगेंगे। मैं फर्स्ट बैरी में स्कैन कर लेता हूँ। सो हमें चलते हैं, इसको हटाना है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और प्रोजेक्ट्स हमारे पास में हो चुका है, एक बार और देख लेते हैं कि हमें एक्सपेंड चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें h1 टैग लगेगा और इधर भी एक h1 टैग लगेगा। यहाँ पर जाते हैं, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर एक्सपेंड टैग देंगे। यहाँ पर हमारे पास में एक h1 टैग होगा और एक और होगा, इसके यहाँ पर जस्ट माइनस का साइन, और
यहाँ पर हमारे पास, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड what is this thing, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी प्लस, और जो भी स्पेन टैग होगा तो हम क्लास नेम देंगे, इसको फ्लैक्स देंगे। देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, अभी हमें इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट्स के सेक्शन को यहाँ Node.js के अंदर, ठीक है। PROJECT प्रोजेक्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली हो चुका है इंपोर्टेड। अब चेक करके देख लेते हैं अपने, ये आ गया हमारा प्रोजेक्ट्स, पर इसमें गैप नहीं आया ऊपर। मार्जिन टॉप दे देते हैं प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद हम मार्जिन टॉप दे देते हैं 20 का, ट्वेंटी का दे दो या फिर 10 का दे दो, जो भी है। ठीक है, आगे से। और हमें एजुकेशन में भी देना चाहिए, एजुकेशन में भी हमें यहाँ पर मार्जिन टॉप 10 देना चाहिए। अब हमें अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, हमें यहाँ पर आ चुका है इस तरीके से कुछ, यहाँ पर चलते हैं, और इसके बीच में हमें गैप देना चाहिए 2 का। हमें एजुकेशन नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, रिजेक्शन भी नहीं चाहिए फिलहाल अभी के लिए। यहाँ पर जाएंगे, गैप दे देते हैं 2 का, हो गया ना। अब हमें ब्लॉक फ्रेल्स का थोड़ा साइज बढ़ाना होगा, तो हम यहाँ पर जाएंगे, हम इसका टेक्स्ट बढ़ाएंगे 2 एक्सेल, सही है। अब ये थोड़ा सेंटर में भी करने पड़ेंगे, तो हम स्पैन टैग में जाएंगे और इसको हम कर देंगे आइटम्स सेंटर, आइटम सेंटर्ड हो चुके हैं, ठीक है। ब्लू फॉर हेल्थ का मुझे कलर भी चेंज करना है। वापस वहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद में हम इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज करेंगे, जो कि ये वाला है सेम, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल एस। देखोगे इसका चेंज हो चुका है कलर ब्लू फॉर हेल्थ का। एंड नेक्स्ट थिंग, और क्या चीज़ थी हमारे पास, अच्छा, इस हमारे पास माइनस का साइन नहीं है, ये वाला साइन है। और दूसरी चीज़, हमें यहाँ पे एक H1 टैग चाहिए, एक बटन चाहिए, है ना। तो हम मुझे यहाँ पर चाहिए एक बटन, स्पैन टैग तो हम दे चुके हैं, यहाँ पर H1 टैग दे देते हैं, और इसके जस्ट नीचे हमें यहाँ पर एक बटन भी चाहिए। मैं सोच रहा था कि बटन कॉपी मार लूँ वहीं से, इसका नाम हम रख लेते हैं लाइव हेयर, और H1 टैग के अंदर जो भी हमारे पास कंटेंट है हम वो सीधा कॉपी पेस्ट मारेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हो गया, कंट्रोल एस। देखते हैं चेक करके। अच्छा, बटन को ही पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। क्लास नेम बैकग्राउंड, मुझे इसका बैकग्राउंड चाहिए ये वाला ही सेम, कंट्रोल सी, और उसके बाद में मुझे इसकी पैडिंग चाहिए एक्स में 4, और पैडिंग वाई में चाहिए 2, और इसकी विड्थ मुझे सेट करनी पड़ेगी बाई 2 करके देख लेते हैं। अच्छा, इसमें 1/2 नहीं होगा, इसको हमें और छोटा करना पड़ेगा, 1/5 करके देख लेते हैं। 1/5 कैसे लगती है, 1/5 छोटा हो गया। अगर मैं इसकी विड्थ 32 करूँ तो 32 सही है ना,
थोड़ा सा और बड़ा करें, 36 कर लेते हैं। ठीक है, बस हमें इसको वहाँ पे राउंडेड 3 सब करना है। हो गया लाइव एयर हमारे पास। ठीक है, अब हमें इसके बीच में गैप 2 भी सही लग रहा है, तो गैप 4 करें। इसमें कितने का गैप है? गैप 2 का ही लग रहा है मुझे, इसमें गैप 4 है इसमें। तो हमें पे गैप जो हमने 2 किया था ना, हम इसको 4 कर लेते हैं। हाँ, अब सही लग रहा है। अब हमें बस अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने एक बना लिया है, हम इसको फर्दर कॉपी पेस्ट मार देंगे। एक बार, 2 बार। देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 आ चुके हैं हमारे। अब हमारे पास अगला जो है बस डाटा चेंज करना रहता है, तो हम बाद में भी कर सकते थे, पर कोई नहीं, भी कर देते हैं। कंट्रोल V। नेक्स्ट। नेक्स्ट। You can see now a project section is completed. If I click on the project, then screen my you scroll up to the projects devo project section. So what can we do it? How can we do it? Basically, we have to make an on click event to the button projects. Hmm, okay, I want to do this. अच्छा, प्रोजेक्ट्स के बाद देखते क्या है। टेक्निकल स्किल्स है हमारी। ठीक है, लास्ट है, बस खत्म होने वाला है। टेक्निकल स्किल्स। और इसके लिए मैं सेम उठाऊंगा। बस प्रोजेक्ट्स की जगह पर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेक्निकल स्किल्स। एंड देन आई डोंट वांट दिस थिंग, तो आई जस्ट रिमूव इट। Bullets. No. I want this thing. For this thing, you know, how can we do it? So I want span tag,
and just is H1 tag, and one after H1 tag minus sign, and firstly is languages, control C, control V, and second thing, that's my languages, control C, control V. नाउ H1 टैग हो चुका है, स्पैन हो चुका है, इसको देते हैं यहाँ पर जाने के क्लास नेम, और उससे पहले हमारे पास में जो लैंग्वेजेस हैं उसको देते हैं क्लास नेम। इसका जो टेक्स्ट है वो होना चाहिए मेरे हिसाब से 2 एक्सल, और जो इसका टेक्स्ट है वो हमारे पास में यहाँ पर होना चाहिए ओके। इसका जो टेक्स्ट का कलर है कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड फ्लेक्स, एंड देन get to let's this thing, so class name text white, so you can see okay I haven't imported this component in app.js. Technical skills imported, control list, that's my technical skills. Languages okay, it's not vertically aligned, I have to align vertically, so just I have to put items, justify center, justify center में भी गड़बड़ है, देखते हैं क्या गड़बड़ आ रही है। अच्छा, हमें हम गलत जगह पर अप्लाई करा रहे हैं इसे, यहाँ पर नहीं अप्लाई कराना, हमें स्पैन में अप्लाई कराना है, तो भी आइटम सेंटर ही होगा, तो यहाँ तक यहाँ पर हो गया आइटम सेंटर। ठीक है, जस्टिफाई सेंटर पर आकर देख लेते हैं भाई क्या होता है। जस्टिफाई सेंटर ये इसकी जरूरत नहीं है, इतना ही आना था। अब हमारे पास में ये काम हो चुका है, हमें और भी चीज़ें चाहिए, क्योंकि सारे काम को पता ही है, हो ही जाएंगे। तो बस इस स्पैन को उठाना है, एक बार उठाना है और बस कॉपी पेस्ट चलना है काम। के बाद एक बार हमें और स्पैन चाहिए। हमारे पास में अगला क्या है, डाटाबेस। I have to put database shit नो, एक बार और चाहिए हमें स्पैन हमारा।
लास्ट हमारे पास में बस शूटर बचता है एक। नाउ हमारा कंप्लीट होने वाला है जल्दी से। कंट्रोल वी एंड देन लास्ट हमारे पास में हमारी सॉफ्ट स्किल्स। यू कैन edit these details on your parity. Okay, these details is mine. Now just check it our application. Our technical skills has been created successfully. है ना? It's looking fine also. Now our last section is footer components. I have to make my new folder footer.js. Now I have to, you can guess guys how many divs for this? एक दो तीन। के 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 हमें चाहिए फाइनली। उसके बाद में हमें एक और div चाहिए। नहीं div नहीं, div तो एक ही चाहिए ना। यहाँ पे एक div लगेगा हमारा, बाकी यहाँ पर दो h1 टैग और एक div। एक h1 टैग, एक और h1 टैग, और उसके बाद में एक और div। You know guys why I have taken div? Because I have to use React icons library and imports all icons. ठीक है, पहले यहाँ पर डालेगा जल्दी से। गेट इन टच, and in this div I have to input all the icons: email, Instagram, LinkedIn, GitHub. ओके तो मेरे पास शायद आई हैव ऑलरेडी जीमेल आइकन, ईमेल आइकन, चलिए आइकन्स के ऑलरेडी हमारे पास, जीमेल का तो ऑलरेडी हमारे पास में है। ओके और कौन सा चाहिए हमें? इंस्टाग्राम चाहिए हमें। यू कैन सर्च फॉर इंस्टाग्राम दिस थिंग, सॉरी ये लिंक्डइन गिटअप, लिंक्डइन और गिटअप। इसका ही ले लेते हैं। And then put something from
रिएक्ट आइकन्स स्लैश, बट सबसे पहले हमें पे एस आई ईमेल चाहिए, हमें सही चाहिए यहाँ पे। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स स्लैश बी एस। अब बी एस के हमारे पास में तीन तीन है। सबसे पहला इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, नेक्स्ट ट्विटर। से चार हमने फुटर ऐड नहीं किया ना नीचे। Now I have to imported my footer component by default imported my .js। देखते हैं नीचे आ गया हमारे पास में ये सब। ओके, अब हमें ये जो मेन डिव है उसको हमें देना होगा क्लास नेम, और हमें चाहिए सेंटर में तो justify सेंटर, और हमें टेक्स्ट वाइट भी चाहिए। टेक्स्ट वाइट। अब हमें ओके हमें सारे वाइट नहीं चाहिए ना, हमें सारे वाइट नहीं चाहिए, अलग करना पड़ेगा। क्लास नेम हमें इसका टैग सबसे पहली बात 4 एक्सेल नहीं 5 एक्सेल चाहिए हमें। और इसका जो हमारे पास में यहाँ पर फ़ॉन्ट होगा उसे मैं यहाँ पर सेमी बोल्ड करूँगा, और इसका जो भी हमारे पास में टेक्स्ट का कलर होगा उसे मैं ये वाला कलर दूँगा। ये हो चुका है बैट इन टच। हमें सेंटर में क्यों नहीं आए हैं यही हमें देखना है। जस्टिफाई सेंटर करने की बजाय पहली बात तो हमने उसको फ्लैक्स नहीं दिया, उसके बाद में हमें यहाँ पे फ्लैक्स बताया होगा आपको कि क्या करना है। कॉलम नहीं हुआ, आइटम सेंटर ये सेंटर में आ चुका है। हमें ऊपर टॉप भी, ऊपर से हमें टॉप से जो है मार्जिन टॉप इसमें दे देते हैं हम 20 का। इसमें मार्जिन टॉप ही नहीं, सिर्फ मार्जिन वाई कर देते हैं, मुझे ऊपर नीचे दोनों से चाहिए। ओ शिट। अगर मैं पैडिंग कर दूँ तो नाउ हमें गैप भी चाहिए और ये सब हाइट भी चाहिए। आ चुके हैं हमारे पास में सारे के सारे आइकन्स। पहले तो हम उनको फिल करा देते हैं क्या करके कि 1 2 3 4। क्लास नेम फिल हाइट, उसके बाद हम यहाँ पे क्लास नेम देंगे, उसको देंगे फ्लेक्स, और फ्लेक्स देने के बाद में मुझे इनके बीच में गैप भी चाहिए होगा 10 का। हाँ, इनका मुझे थोड़ा साइज ही बढ़ाना पड़ेगा। मैं इनका टेक्स्ट पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, या फिर 2 एक्सल कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमें इसका टेक्स्ट भी हाइड करना होगा। टेक्स्ट वाइट एंड देन, और हमें यहाँ पे गैप देना होगा इसके अंदर।
हमने गैप किया 10 का, सॉरी 4 का दे देते हैं। क्या 4 का गैप मुझे लगता है अच्छा नहीं लग रहा, तो हम 10 का ही दे देते हैं। ऐसे ही है ना? हाँ ऐसे ही लग रहा है मुझे, गैप 10 सही है। तो हम फाइनली वी हैव कंप्लीटेड all the portfolio website, huh? Okay, now if we want to click our project button, then it has scrolled to the up to the projects div। तो ये देख लेते हैं लास्ट बस। I want to go hero section। It's my button projects on, click event, and I am giving function name as scroll down, scro scroll down। Once scroll down, this is the function, okay, and window dot scroll, window dot scroll, okay. This type of function, just search window dot scroll, just copy it, control S। I don't know the top length, so I just copy it। Okay, now let's check it। प्रोजेक्ट्स पे करते हैं क्लिक, तो हमें प्रोजेक्ट्स पर आ जाते हैं। ठीक है गाइस, जैसे हम प्रोजेक्ट्स पर करते हैं क्लिक तो हमें प्रोजेक्ट्स पर आ जाएंगे। सो अब हमारे पास में जो लास्ट काम रहता है वो रहता है क्या, डिप्लॉय करना है हमारी वेबसाइट को। तो हम जाएंगे, सबसे पहले मैं हटा ही जाता हूँ यहाँ से, कहाँ गया ये, हटा देता हूँ, या इस पर आ जाते हैं। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो नेटलीफाई। हम नेटलीफाई पर डिप्लॉय करेंगे अपनी ये वेबसाइट। तो लास्ट स्टेप रह गया है हमारा। ठीक है, यहाँ से तुम लॉगिन कर सकते हो, मेरा ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा क्योंकि मैंने किया हुआ है। अब कैसे डिप्लॉय करते हैं ये भी सीख लेते हैं। हम करते हैं ऐड न्यू वेबसाइट, डिप्लॉय मैन्युअली। ठीक है, अब डिप्लॉय करने से पहले हम जाएंगे अपने फोल्डर पे, और हमें जाना होगा अपने टर्मिनल पर, कंट्रोल सी 2 बार कर देना। नाउ वी हैव टू बिल्ड आवर प्रोजेक्ट। ओके, आवर होल सोर्स कोड is become packed into a single folder। ठीक है, which becomes build folder। तो now we have to run command npm run build, npm run build command, you can see it's a build folder। okay, build folder has been created successfully। so अभी हो रहा है अभी this build folder we have to put manually, अच्छा ओके, इसको क्लोज कर देते हैं हम। हमने फिलहाल इस फोल्डर को, ठीक है, हमने क्लोज कर दिया। नाउ वी गो टू डेस्कटॉप, इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे। ओके, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये रहा हमारा GFG पोर्टफोलियो का फोल्डर। नाउ इन दिस क्लाइंट फोल्डर दिस डॉट गेट आई डोंट नो। नाउ दिस बिल्ड फोल्डर मैन्युअली ड्रैग एंड ड्रॉप। Let's see what happened।
Is it this website ask for any subscription? No, it's free. It's free. Okay, okay. Now प्रोडक्शन पब्लिश्ड हो चुकी है हमारी वेबसाइट डिप्लॉय. हम जैसे इस लिंक पे करते हैं क्लिक, तो यू कैन सी दिस अवर वेबसाइट. ओके, यू कैन सी ऑल्सो check it's working or not. Control C. I am providing this link. You can check it in your browser. सो वो नेक्स्ट काम क्या रह गया हमारा? बस हो गया सब कुछ. सो फाइनली वी हैव डिप्लॉयड द अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट ऑन द नेटलीफाई. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, if you have any questions, so you can ask. These guys are saying that they have observed everything very precisely, and it was very nice session, sir. Okay. They are shying to interact with you right now, so yeah. Okay, so thank you so much, sir, for this session. It was very nice of you, as well as we are very lucky that we got a chance to learn these portfolio things from very skilled person like you, sir. Thank you again. Okay. Thank you so much to Yeah, all of you. thank you, I sir. hope that you all will learn something, or you will grab something from this session, right? Yeah, sure, sir. Sure, sir. Okay, thanks. Okay, so everyone, I hope you all have done today's session. As from now onwards, you will be having a project which you can show on your resume. We, the whole GFG chapter DC team, hope that you all loved every single session of this development week, and also the host like me and Rupaji. Hope to see you soon again and with some another exciting session. Okay, you all can leave. Thank you so much. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing.